Ladies and gentlemen, welcome back to this particular session of success. तो आज हमने बात करनी है कि कामयाबी क्या है, What is success, और इसको हासिल करने का क्या तरीका है. क्योंकि हमने यंगस्टर्स को तैयार करना है to be successful people on this planet, to be good human being and to be the most successful people on the earth. इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि सुकरात, जो यूनान के बहुत सबसे बड़े फिलोसोफर हैं और पूरी दुनिया में उनका बड़ा नाम है, उनके पास पहले जमाने में एक स्कूल होते थे जिनको वॉक इन स्कूल्स कहते थे, कि स्कूल लगे होते थे, कोई भी किसी वक्त शागिर्द आके कोई सवाल पूछ सकता था. तो एक शागिर्द है और उसने कहा कि सुकरात सर, मैं आपसे सक्सेसफुल बंदा बनने का फार्मूला समझना चाहता हूँ. उन्होंने उसको लिया, नदी में दरिया में ले गए और उसने कहा जब तक मैं न कहूँ तुमने बाहर नहीं आना, और उसको पानी में डुबो दिया. अब पानी में डुबो के उसका सर पकड़ लिया. जब सर पकड़ा तो उस शख्स ने एक आध मिनट तो अपना सांस रोका, उसके बाद he was dying, he was trying to come out, लेकिन इन्होंने इसका सर पकड़े रखा, दबाए रखा, और कुछ देर बाद उसको ऊपर उठाया. जब उठाया तो फिर उससे पूछा कि जब मैंने तुझे नीचे डुबो के रखा था इस पानी में, तो उस वक्त तेरे क्या तसुरात थे, क्या ख्याल थे. उसने कहा था कि all I was thinking about one thing and that was breathing. मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था कि breathing, सांस, और I was dying for breathing. मैं उसके लिए मर रहा था. I was hungry कि मेरी सांस चल पड़े. मैं हाथ पांव मार रहा था, मैं हर तरह की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से ये मेरी सांस चल पड़े. तो सुकरात ने कहा कि यही फार्मूला मैं आपको देना चाहता था कि आपने जब तक you are not hungry for success, जब तक आप कामयाबी के लिए भूखे नहीं हो, हमतन गोश नहीं हो, उस वक्त तक आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते. अब क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने एक स्टडी जारी की जिसके अंदर उन्होंने 22 इयर्स लगाए, 22 साल लगाए, और उस 22 साल के बाद के अंदर उन्होंने 3,50,000 जो भी कामयाब लोग थे उनके एक स्टडी पैटर्न शो किया कि इनके थिंकिंग पैटर्न क्या है, इनकी जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, उसका राज क्या है. No, this was a huge research paperwork that was published by the university. उसके बाद उन्होंने क्या नतीजा निकाला? उन्होंने नतीजा ये निकाला कि जितने भी कामयाब लोग दुनिया में पैदा हुए हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन है, और वो जो कॉमन चीज है वो क्या है? ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच. लेकिन सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है, हाई लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म. हाई लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म है उनके अंदर बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव सोच है. ये उन 3,50,000 लोगों के दरमियान एक चीज कॉमन पाई गई थी. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हमने जब इनको स्टडी करने के बाद हमने उनकी सक्सेस से रिलेटेड, उनकी कामयाबी के से रिलेटेड जब उनसे सवालात पूछे तो उन्होंने 3 ही हमें जवाब दिए कि एक कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले यह है कि आपको जुनून की हद तक उससे प्यार होना चाहिए, जिसको मैंने कहा है कि यू शुड बी हंग्री. आपको एक उसकी भूख होनी चाहिए. जब आपको भूख होगी उस वक्त आप क्या करेंगे? आप उसके लिए कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे. That was their first answer. Number 2 answer was that you have to pay the full price of the success. आपने जब कामयाबी है उसकी फुल प्राइस पे करनी है. You cannot get any deal. There is no sale. There is no 50-50 sale. There is no 50% off. There is no buy one get one free deal. No, not at all. If you want to be successful, आपके पास जो डील है वो एक ही है, that you have to pay the full price. आपने पूरी कीमत उस कामयाबी की अदा करनी है. और तीसरा उन्होंने जवाब जो दिया वो ये था कि you have to pay the price in advance.
کہ آپ نے ایڈوانس میں اس کی قیمت ادا کرنی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ آج جو ایک کامیابی چاہتے ہیں اور کہیں کہ اس کی قیمت میں بعد میں ادا کر دوں گا. نو، پہلے قیمت ادا ہوگی پھر کامیابی آپ کے پاس آئے گی. انگلش کے اندر ایک سیئنگ ہے کہ nothing succeeds like success. Nothing succeeds کہ جو کامیابی ہے اس سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں ہے. جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں. Learn to succeed by succeeding. There's another saying کہ آپ نے یہ چیز لرن کرنی ہے کہ ہم نے ایک کامیاب انسان کیسے بننا ہے لائف کے اندر. یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ سیکھنی ہے لائف کے اندر. اور اگر آپ یہ چیزیں سیکھ گئے then you have to set your goals. پہلے آپ نے یہ چیزیں سیکھنی ہے کہ میں I'm hungry for this success. Number 2, I am going to pay the full price. And number 3, I'm going to pay the price in advance. یہ اگر آپ تینوں نے کی, اب آپ نے کہا ہے کہ وہ کامیابی میں نے کس فیلڈ میں حاصل کرنی ہے. سب سے عام کوشچن, and that is your goal. Life without goal. گول کا مطلب ایک مقصد. کس مقصد کے لیے آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے؟ آپ نے ایک کامیاب انجینئر بننا ہے, ایک ڈاکٹر بننا ہے, ایک پولیٹیشین بننا ہے, ایک بزنس مین بننا ہے, ایک اچھا انسان بننا ہے, ایک پیسے مند, دولت, جو بھی آپ نے کامیابی, ایک ایتھلیٹ بننا ہے, ایک گڈ پلیئر بننا ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلنا ہے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس گول کو سیٹ کرنا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی. اور جب وہ گول سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ود لائف, remember one thing, this is my last sentence today in this session, کہ life without goal, مقصد کے بغیر زندگی ایسے ہی ہے جیسے there's a ship without a rudder, or you are driving a car without a steering wheel. کہ ایسے ہی زندگی آپ چلا رہے ہیں کہ جیسے ایک گاڑی آپ چلا رہے ہیں بغیر سٹیئرنگ وہیل کے. کیا آپ بغیر سٹیئرنگ کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال آج آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے.